celebrates its 76th Independence Day, Swatantrata Divas, and is commemorating 75 years, glorious years of the independent India. A brief detail of the today's events are hoisting of the Indian national flag by the director M.B.I. Gurgaon, address by the director M.B.I. Gurgaon, followed by sharing of thoughts by the audience, performances by the students, and finally distribution of sweets at ground floor Scholars Club. May I request the director sir to kindly advance for hoisting the national flag. आदरणीय महोदय डायरेक्टर्स और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको झंडा आरोहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Good morning and congratulations to all of us on the 75th anniversary of India's independence. It is almost a once in a lifetime event to celebrate these milestones in a nation's journey. I'm sure all of us will be around for the centenary as well 25 years down the road, but today is still a very momentous, not just another Independence Day, but a very special Independence Day, given it's the 75th anniversary. I just want to share a few thoughts on this day. We are all assembled here out of love, respect, sense of jubilation, sense of pride in our country. And today it's important to recall the great sacrifices that so many of our founding fathers of this country and independence fighters have made for us to see this day in this manner. But I just wanted to share something with you because being a management institution, we strongly support critical thinking. And I would certainly like to leave the students as well as everyone else here with a thought about questioning certain things, questioning certain obvious things, questioning certain things that seem to be self-evident. Because questioning is important in a school, in a country, in today's age, everywhere. It is but only normal to love one's own nation. Just as normal as it is to love one's parents, perhaps. It is delusional to think that one's nation, just like one's own parents, are above making mistakes.
Love is a beautiful thing. Blind love is a dangerous one. As we think about nationalism, remember that nationalism and patriotism are beautiful sentiments, emotions that have driven hundreds, thousands around the world to lay down their lives for their nations. And yet, somebody like Einstein once said, nationalism is an infantile disease. It's but the measles of mankind. So my advice to the youngsters assembled here as well as the rest of us is one of responsible consumption. Responsible consumption of those strong portion of nationalism. I cannot think of any other sentiment that, at least in recent history, has caused more bloodshed around the world. So it's absolutely fine to be a proud Indian. In fact, there will be something very fundamentally wrong in us if we are not one. Among all the countries in the world, India has given and possesses as much as any other to be proud of. But to let that pride present itself in some form of supremacy over anybody else in the planet would be a dangerous mistake. So as we celebrate India's 75th Independence Day anniversary, it's perhaps good to question and to ask ourselves, what is the idea of India? And while that is a subject matter of a very long conversation, and I don't want to get into it in details, but I would urge you to always remember India's national motto. Remember, it is Satyameva Jayate, the truth shall triumph. It does not say India shall triumph. It does not say a particular set of people shall triumph. It does not say a particular faith or a particular set of books or a particular set of emblems shall triumph. Truth shall triumph. And I certainly hope that going forward, it is that value of Satyameva Jayate that will brighten our way from this point on. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Any of the audience who would wish to share their thoughts on this occasion? Please, most welcome, sir. Respected Director at TI Gurgaon, dear faculty colleagues and entire MDI fraternity, I wish you all this 75th Independence Day celebration, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज इस स्वतंत्र दिवस पर मैं आपके सामने एक कविता पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज़ादी के आज 75 साल परिपूर्ण हो रहे हैं और ये आज़ादी उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये हमारे तमाम स्वतंत्र सेनानी और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी, उसी का ये बदला है। तो जो आज हम स्वतंत्र भारत में इस 75वें स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं।
तो एक कविता लिखी है किसी शायर ने, उसकी वो कविता मैं पहले पढ़ना चाहूँगा, जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी की लिखी गई है। बाहर आई है मौसम की आंधियाँ लेकर, बाहर आई है मौसम की आंधियाँ लेकर, चमन से जाएंगी फूलों की लालियाँ लेकर। इलाही हुक्म दे घटाओं को बरसने का, इलाही हुक्म दे घटाओं को बरसने का, गरीब आते हैं कागज की कश्तियाँ लेकर। ये कहकर सुलाया था माँ ने भूखे बच्चों को, ये कहकर सुलाया था माँ ने भूखे बच्चों को, फरिश्ते आते हैं ख्वाबों में रोटियां लेकर। सबो रोज़ जो कर रहे थे मेरे मरने की दुआ, सबो रोज़ जो कर रहे थे मेरे मरने की दुआ, वही रो रहे हैं मेरे जनाजे पे हिचकियाँ लेकर। तमाशा जो देख रहे थे डूबने का मेरे, तमाशा जो देख रहे थे डूबने का मेरे, वही निकले हैं आज कश्तियाँ लेकर। कफन उठाओ ना चेहरे से मेरे कोई देख ना ले, कफन उठाओ ना चेहरे से मेरे कोई देख ना ले, ऐ वतन मैं सो रहा हूँ तेरी निशानियाँ लेकर। आज के इस 75वें स्वतंत्र दिवस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ये सांसें ये धड़कन, ये सांसें ये धड़कन, ये जीना मरना, ये सांसें और ये धड़कन और ये जीना मरना, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ये हवाएं और ये फिजाएं और ये सर पर नीला समंदर, ये हवाएं और ये फिजाएं और ये सर पर नीला समंदर, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ये ज़मीन ये ज़माना, ये ज़मीन ये ज़माना और तेरे सिकम में हमारा आखिरी ठिकाना। ये ज़मीन और ये ज़माना तेरे सिकम में हमारा आखिरी ठिकाना, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ये नौजवान और ये तेरे सिपाही, ये नौजवान और ये तेरे सिपाही, 15 अगस्त को हमने आज़ादी है पाई। ये नौजवान और ये तेरे सिपाही, 15 अगस्त को हमने आज़ादी है पाई, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। ये मौजूदा दौर और आज़ादी के ये 75 साल, ये मौजूदा दौर और आज़ादी के ये 75 साल, तूने हमें इतना नवाजा, हाँ यही है अमृत काल। ये मौजूदा दौर और आज़ादी के 75 साल, तूने हमने इतना नवाजा, हाँ यही है अमृत काल, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। और आखिर में ये इमलाक और ये फ़िक्र ज़िंदगी और ये ख़त्म ज़िंदगी, ये इमलाक और ये फ़िक्र ज़िंदगी और ये ख़त्म ज़िंदगी, ये सब कुछ है तेरा, इसे करूँ मैं तेरे नाम। ऐ वतन क्या लिखूँ मैं तेरे नाम, दिलो जा निसारा करूँ मैं तेरे नाम। जय हिंद एंड हैप्पी। थैंक यू सर। A very happy Independence Day to all. And for students who don't know me, I am Professor Anjali, and I also happen to be an ex-Indian Air Force officer. So I have special sentiments, emotions on this particular day. So congratulations to you all. I would like to hum a few lines. I am not a singer, let me declare it, and not a great poet also. But the day is such, I would like to share a few lines. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे,
तेरी ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। दिल मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आदरणीय डायरेक्टर साहब, आपको आप पूरे एमडीआई परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई अपने देश से कितना प्यार करता है। इसका कोई पैमाना तो लेके कोई घूम नहीं रहा कि मैं ज़्यादा करता हूँ या तुम ज़्यादा, या वो कम या वो ज़्यादा। और रही बात भारत की, तो मैं भारत को कोई देश मानता ही नहीं। भारत कोई मुल्क नहीं है, भारत एक विचार है, भारत एक सोच है, और जो हमेशा स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी भी, क्योंकि स्वतंत्रता आत्मा की है। यहाँ शरीर की नहीं है। आप किसी देश के लोगों को गुलाम बनाते हैं, लेकिन उस देश में रहने वाले व्यक्ति यदि अपनी आत्मा से स्वतंत्र हैं तो वो हमेशा स्वतंत्र ही रहते हैं। यदि इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए तो नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन वो सोच से स्वतंत्र। गांधी भी कई बार जेल में रहे, लेकिन वो सोच से स्वतंत्र थे। तो भारत एक सोच है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं। ये बात अलग है, शायद हम उनका चिंतन मनन नहीं करते या उनके बारे में विचार नहीं करते, लेकिन वो मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिए। एक हमारे सेंटर में आई एम प्रोफेसर जैन एंड रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंडियन थॉट एंड मैनेजमेंट। तो हमने करीब 100 से 125 स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछा था, ऐसे कौन से जीवन मूल्य हैं जो अपने लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं केवल इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आज भी लोगों के जीवन में ये मूल्य इम्पोर्टेंट है और लोग उसको मानते हैं। उसमें एक जो बड़ा मूल्य वो है अहिंसा और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल स्पीशीज। अब ये देखिए कि ये भारत का एक मूल्य है। यदि ये मूल्य है तो भारत गुलाम कैसे है? भारत कभी गुलाम था ही नहीं, ना है, ना कभी आगे कोई कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा सबके सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। सर्वधर्म समभाव, प्रेम और करुणा का भाव, निष्काम कर्म और प्रयासोन्मुखता, समन्वय, प्रकृति से जुड़ाव, अनेकांतवाद या स्यादवाद जिसको बोलते हैं, कृतज्ञता, पारस्परिकता जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, समय का चक्र, परिवर्तनशील है सब कुछ भी एक सा नहीं रहने वाला, करोड़ों वर्षों से ये प्रकृति है और ये चलती रहेगी हमेशा। अपरिग्रह, संचय ना करना, विचारों में खुलापन, स्थित प्रज्ञा, जो गीता के दूसरे चैप्टर में कहा है बुद्धि में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। अचौर्य, चोरी ना करना, विद्या ददाति विनयम, विनय बहुत जरूरी है जीवन में जो हमें विद्या से मिलता है। भक्ति और श्रद्धा का भाव, क्षमा वीरस्य भूषणम, दान धर्म, सहिष्णुता और संयम, जितेंद्रिय, इंद्रिय निग्रह, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम और आत्मा का चिंतन। भारतीय मनुष्यों ने सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात की है और उसी के चिंतन की बात की है। और जैन धर्म तो इस हद तक जाता है, वो ये कहता है कि कोई गॉड है ही नहीं, ना कोई गॉड का अस्तित्व है, अस्तित्व मानव का है और मानव के अंदर जो आत्मा है उसका रियलाइजेशन ही आपको ईश्वर बनाता है। तो अब ये आप बताइए कि भारत को आप देश कैसे कहते हैं जिसके अंदर ऐसे विचार हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भारतीय जीवन मूल्य है
और जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है एक बार पलट के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Respected Director, sir, faculty members, family members, children, dear students, and my colleagues. A very good morning to all of you once again. Today, on 76th Independence Day, Swatantrata Divas, when we celebrate 75 years of India's independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, to commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements, I extend many best wishes and congratulations to all of you for this auspicious occasion. August 15, Independence Day, a day of honor and pride for every Indian. We remember our great leaders and freedom fighters who contributed to the independence of India, who did not even care about their lives and willingly sacrificed for the independence of our country, and because of them, today we are living our life free. Long journey of 75 years after independence, our country, the biggest democracy, a living constitution and a rising economic power, has been making continuous progress in the field of education, science and technology, sports, agriculture and modern weapons, military, etc. Today, we feel proud of the continuous progress made and achieving the milestones set by our great nation. It is satisfactory to see what we are today, but a lot more progress is still to be achieved. We are not to criticize what had not been done, but to rejoice what we did. Rediscover our hidden strengths to take sincere, synergistic action and pledge to collectively work together for more and more achievements in times to come as a citizen of the great India. Once again, I pay my utmost respect and tribute to great revolutionaries and freedom fighters because of whom we are living our life freely. Thank you. Jai Hind. Now, if we have concluded sharing of the thoughts, so I hand over the stage to the students for their cultural celebrations. Over to students, please. Good morning, everybody. Happy Independence Day. Respected Director, sir, esteemed faculty and my fellow friends. Sanskriti, the cultural club of MDI, has prepared some cultural performances for all of you. So, we will be starting with Souvik Chakravarti from PGDM BM program, who is a senior division engineer at Ministry of Power, Government of India. He will be presenting a poem for all of us. Souvik, please come. A very good morning to respected directors, respected faculties and respected MDF fraternities, all my dear batchmates and juniors. Today we are celebrating 76th Independence Day, Azadi Ka Amrit Mahotsav. So what is independence? As already mentioned by Jain sir, independence is the freedom of your soul, your thought, your mentality. Get out of the bondage of the all small thought, small thinking. And on this issue, before the independence period, Gurudev Rabindranath Tagore has written a poem, When Mind is Without Free. Today I want to recite that poem now.
where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is laid forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father laid my country away. Thank you to all. Thank you, Souvik. We now have our music club, mandolins. We have Rishikesh, Gitanshu, Giridharan and Partha from PGDM second year who have a musical performance for us. Hello. Good morning, everybody. Wishing all of you a very, very happy Independence Day. My name is Gitanshu. We have Rishikesh on the guitar and Giridharan and Partha with us here. This first song is called Azadiyan. It's a song about passion, about ambition. पैरों की बेड़ियां खामों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुरे करे, ना डरे, ना डरे। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे है कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के झूमेंगे आसमां, आसमां, आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे है कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के झूमेंगे आसमां, आसमां, आसमां। आज़ादियाँ, आज़ादियाँ मांगे ना कभी, मिले 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 आज़ादियाँ, आज़ादियाँ जो छीने वही जीले जीले जीले। कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नहीं है ये या फिर रात होने को है। कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नहीं है ये या फिर रात होने को है। आने वाला वक्त देगा सलाहें, या फिर से मिलेंगे दोराहे। खबर क्या बनता। Thank you very much.
again a very happy 75th Independence Day to everyone here. So I'm going to be singing two songs, and the first song is going to be very short, but it's very close to my heart because as a child I used to sing this at my school, and it's a patriotic song, Mera Karma too. If you know, please sing along. I grew up singing this song, so it has a patriotic feeling, but it also has a nostalgic factor attached to it. So let's start with that song. मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दे देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दे देंगे, है वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दे देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दे देंगे, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। So, thank you. The second song is going to be a more contemporary take, and it's a song, very beautiful song from the movie Razi, which is "Ae Watan Watan." So, we're going to sing that next. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू,
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वतन है वतन मेरे वतन। Thank you so much. Next up we have Giridharan with us. Good morning everyone. Happy Independence Day. I'm Giridharan from the PGDM HR. I'm back. And I'm going to be singing Ye Jo Desh Hai Tera for starters. ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी के जो खुशबू तू कैसे बुलाएगा, तू चाहे नहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, कोई कोई दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है पर से, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे न माने। आवाज दे तुझे बुलाए वही दे, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी कोई एक सदी, सारी जिंदगी तू न पूछ रास्ते में काहे आए है, इस तरह हो रहा है। तू ही तो है राह जो सुझाए, तुझे तो है अब जो ये बताए, चाहे तो किस दिशा में जाए वही दे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
caveat here is I don't know the language of Hindi, so I'll be singing Mata Jai Salam, but in Tamil, which is my language. அங்கும் எங்கும் எங்கும் சுத்தி சுத்தி தெரிந்தேன், சின்ன சின்ன பறவை பொந்திசை எங்கும் பறந்தேன், வெயிலிலும் மழையிலும் விட்டு விட்டு அலைந்தேன், முகவரி எது என்று முகம் தொலைத்தேன், மனம் பித்தாய் போனதே உன்னை கண்டு தேடுதேன், குழந்தைகள் நீளுதே, இதயம் இதயம் துடிக்கின்றதே, எங்கும் உன்னோர் பாசம் இல்லை, ஆதலால் உன்மணி தேடினேன், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். வண்ண கனவுகள் கருவுக்குள் வளர்த்தாய், வந்து மண்ணில் பிறந்ததும் மலர்களை கொடுத்தாய், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கடல்களை கொடுத்தாய், அந்த வனம் நட்டு வைக்க நதி கொடுத்தாய், குந்தன் மார்போடு அழைத்தாய், என்னை ஆளாக்கி வளர்த்தாய், சுகமாய் ஒன்று கொடுத்தாய், பச்சை வயல்களை நீ பரிசளித்தாய், பொங்கும் இன்பம் எங்கும் தந்தாய், கண்களும் நன்றியால் பொங்குதே, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். தாயே உன் பெயர் சொல்லும் போதே இதயத்தில் மின்னலை பாயுமே, இனி வரும் காலம் இளைஞரின் காலம், உன் கடன் மெல்லிசை பாடுமே, தாயவள் போல் ஒரு ஜீவன் இல்லை, அவள் காலடி போல் சொர்க்கம் தேவையில்லை, தாய் மண்ணை போல் ஒரு பூமி இல்லை, பாரதம் எங்களின் சுவாசமே, தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். Thank you very much.
Thank you, Yashvi. So that's what we have from Sanskriti. Thank you all. Would also like to thank the student chairperson, Professor Vidhu Gaur, and the officer in charge Pavan sir and Mithilesh sir, for their warm support. Thank you. Thank you very much for such a nice performance. We all enjoyed. I think if we can have a loud round, a clapping for all these students who are here. I thank you everybody for finding out your time to come and celebrate this wonderful event, this auspicious occasion. Personally, at this place, those who are online also witnessing the event, I am also thankful to them to make this particular day memorable. I would request everybody, if everybody can assemble for a group photograph. I would request directors are also, so kindly join, faculty members also to kindly join for the photograph, please. After the photograph only, we will be going for the sweet collection. Thank you very much.